Hello, my dear friends. Welcome all of you in my JEE mathematics classes. Topic limits and continuity. Here there is a question. Let fx barabar integral 0 to x t plus sine 1 minus t dt. X belongs to R. Then limit x tends to 0 fx upon x cube is equal to. Option number first minus 1 by 6, second 2 by 3, third minus 2 by 3, fourth 1 by 6. This is question of JEE Main 2024. This is question of JEE Main 2024. We are going to solve this question with our basic knowledge. Here limit x tends to 0 f of x upon x cube equal to integral 0 to x t plus sine 1 minus et dt upon x cube. Now this is in the form of 0 by 0, a limit x tends to 0. Since limit x tends to 0, this integral will be 0 to 0. So numerator will be equal to 0. जैसा कि हम फॉर्मूला जानते हैं a to a इंटीग्रल fx dx इक्वल टू 0. तो 0 to 0 फंक्शन ऑफ ft dt इक्वल टू 0. रिप्लेस x by 0. तो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ 0 by 0. So applying L'Hospital rule, L'Hospital rule, the differentiate numerator and denominator with respect to x separately. And now we are going to differentiate numerator. The limit x tends to 0. Replace t from upper limit. This is x plus sine 1 minus e power x into derivative of upper limit 1 minus replace t by lower limit. The lower limit is 0 plus sine 1 minus e power 0 into derivative of lower limit is 0 upon 3x square. Derivative of x cube is x square. This is equal to limit x tends to 0 x plus sine 1 minus ex upon 3x square. This is also in the form of 0 by 0. Replace x 0 e power 0 1 minus 1 0 sine 0 0 0. Again using L'Hospital rule. फिर से हम L'Hospital rule का उपयोग करेंगे. Again using L'Hospital rule. Once again limit x tends to 0 fx upon x cube equal to limit x tends to 0 integral 0 to x t plus sine 1 minus et dt upon x cube. This is in the form of 0 by 0. Because 0 to 0 integral will be 0, x equal to 0. Using L'Hospital rule, they differentiate numerator. If we differentiate this integral to replace t by upper limit, the x plus sine 1 minus e power x into derivative of upper limit minus replace t by lower limit into derivative of lower limit upon x cube का x square हुआ. Limit x tends to 0, x plus 1 sine 1 minus ex upon 3x square. And this is also in the form of 0 by 0. So, again differentiating numerator and denominator with respect to x separately. The limit x tends to 0, 1 plus cos 1 minus ex. Using chain rule, sin का cos होगा into 1 का 0 minus e power x upon 6x. Differentiating denominator x is 3 into 2x
6x. This is equal to limit x tends to 0 1 minus ex cos 1 minus ex upon 6x. This is also in the form of 0 by 0. E power 0 1, e power 0 1, 1 minus 1 0, cos 0 1, 1 minus 1 0, 0. Again differentiating numerator and denominator with respect to x separately. The limit x tends to 0, derivative of 1 is 0, minus u into v cos 1 minus ex v into derivative of ex is ex plus ex into derivative of cos minus sin 1 minus ex into 0 minus ex upon 6. 1 का डेरिवेटिव 0 हुआ, माइनस कॉस 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई में लिया, एक्स का डेरिवेटिव एक्स मल्टीप्लाई में लिया, कॉस का माइनस साइन और 1 का 0 माइनस एक्स. दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एक्स कॉस 1 माइनस एक्स, डबल माइनस मल्टीप्लिकेशन प्लस एक्स होल स्क्वायर इंटू साइन 1 माइनस एक्स इंटू साइन 1 माइनस एक्स अपॉन 6. नाउ replace x by 0, e power 0 1, e power 0 1, cos 1 minus 1 0, cos 0 1. The first term is minus 1 plus e power 0 1 square into sin 1 minus 1 sin 0 0, 1 multiply 0 upon 6. This is equal to minus 1 by 6. So our option number first is correct. तो मैं स्टेप बाय स्टेप इसको चेक करते गया, ये 0 by 0 के फॉर्म में है, डिफरेंशिएटिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली विथ रेस्पेक्ट टू एक्स मैंने करते गया और चेक करते गया. अंत में मेरा वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू निकल के आ गया -1 by 6 विच इज आवर ऑप्शन नंबर फर्स्ट. तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा. इसी प्रकार का और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. उम्मीद है आपके पढ़ाई में ये छोटा छोटा वीडियो आपको बहुत मदद करेगा. बहुत बहुत धन्यवाद.